Hey my loves, कैसे हैं आप सब लोग? So I'm back with my another video. So this is the party look that I have recreated for you guys. So if you want to see how I created this look, then keep on watching. So guys, for my face I'm gonna start with the Joy Pure Aloe Multi Benefit Skin Cream Moisturizer. और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में अवेलेबल मिलेगा. देन गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ नायका नेचुरल का सी बकथॉर्न कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है. आप एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं वीडियो में कुछ बोल रही हूँ. एक्चुअली व्हेन आई वाज फिल्मिंग दिस वीडियो मेरा जो माइक था वो ऑफ था, सो अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो इसमें ढंग से बन नहीं पाई है, बट मैंने वॉइस ओवर कर दिया है. सो आई होप माय लव्स यू वोंट माइंड विद दिस. एंड देन मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी एंड इसे अच्छे से मसाज दूंगी ताकि ये मेरे स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. एंड देन नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस का बेज मैजिक सूदिंग प्राइमर और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. इसे लगाने से आपका काफ़ी स्मूथ कैनवस भी रहेगा और आपका जो बेस मेकअप है वो भी काफ़ी समय तक आपके फेस पे रहेगा. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द बेस. एंड बेस के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल मेकअप. दिस इज द फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड नेचुरल बेज. Now here I'm using foundation और winter times है और winter times में मैं बहुत ही कम foundation का यूज़ करती हूँ for a base makeup. But yeah, मैं ज़्यादातर concealer का ही यूज़ करती हूँ because concealer काफ़ी light coverage देता है as compared to the foundation. एंड देन मैं अपने फाउंडेशन बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन स्पंज और मैं इसे काफ़ी अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी. So guys, for the concealer, I'm using the Maybelline Age Rewind concealer underneath my eyes, on my forehead, on my nose, the corner of my lips, on the chin, and also at the jawline. And I'm going to blend with the Miniso. These are the wedge sponges and ये मैंने ख़रीदा था 250 रुपीज़ में और इसमें I think total sponge है 30. So it contains 30 sponges. So I definitely recommend you guys, if you are looking for super affordable sponges, then go for this one. I'm going to blend it nicely. Now guys, to set my base, I'm going to be using L'Oreal Infallible Compact Powder and this is the shade Warm Vanilla. For the contour, I'm using L'Oreal True Paris Glam Bronze Contour. I love this one. It's amazing. And also around my lips. Now for blush, I'm using Focallure BO5 Fetching. It's not opening. So this is the shade. So for eyes, मैं आज यूज़ करूँगी Makeup Revolution का Flawless Foil. Only this one, and this is the shade Rose Gold. मुझे बहुत पसंद है. So with the help of this brush, I'm going to take the product and apply on my waterline. Like not waterline, lower lash line. Now for the highlighter, I'll be applying Wet n Wild Hello highlighter. This is the liquid highlighter. लगाऊंगी
And on top of this highlighter, I'll be using Maybelline Master Chrome. This is the metallic highlighter and this is in the shade Molten Gold. So this is how it looks like. I love this one too. The Essence one. This is the Get Big Lashes Volume Kill Mascara. I'll be applying this upper lashes. So for the lips, I'm using Wet n Wild Mega Last lip color and this is the shade Smoking Hot Pink. Ooh. For my hair, be using Tony and Nykaa Sea Salt Texturizing Spray. बहुत ही अच्छा स्प्रे है ये, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है आपके बालों को। स्टार्टिंग में आपको वेट वेट लगेगा बट देन इट जस्ट लुक्स अमेजिंग।